Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, I'm going to discuss about the effects of competition. We have already discussed about the competition in last video, in which we have discussed that what is competition. Competition is the type of negative interaction in which the two participating individuals or two participating partners, one partner is getting benefit and another one is getting harmed by the another one. So this type of interaction between two partners is called as the competition, in which one get benefit and second one get harmed. So यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ competition. Competition have two type of effects. First effect is on small scale and second effect occur at the large scale. Now first effect which occur at small scale, it is called as the ecological effect, or we can say this effect occur at the ecological time scale. Or second one which occur at large scale, it is called the evolutionary effect. मीन्स ये जो चेंज होगी ये एवोल्यूशन के साथ होगी, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होगी और इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा चेंज होने में. सो दैट्स व्हाई दिस ऑकर एट द large scale and it occur at evolutionary time scale. Now first of all, the effect which occur at the ecological time scale include the two effects. First is called the competitive exclusion principle and second one is called as the ecological compression. Second effect is occur at the evolutionary level, which is at large time scale, and this include character displacement. One by one we will discuss all these effects. So first effect which occur at the small time scale is called as the competitive exclusion principle. So this principle states that if the two species they occupy the same geographical area, suppose this is species A and this is species B, if they occupy same geographical area and they are totally depend upon the same resource for their food requirement, and if they share the same niche, this is the niche for two species, then one species which is more competitive, it help in the exclusion of other less competitive species. This is called the competitive exclusion principle. सो अब हम बात करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन किस तरीके से होगी और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन किस केस में नहीं होगी. सपोज देयर आर टू स्पीशीज विच इज स्पीशीज ए एंड सेकेंड वन इज स्पीशीज बी. if these two species they live in same geographical area but both of them have different niches, then there is no competition between these two species for the resource, for the space, for any type of other reproductive purposes. So both of them can coexist. So two competing species can coexist in stable geographical area due to the niche differentiation and due to the resource partitioning. Niche differentiation means both of them have different habitats to live, or resource partitioning means this species A depend upon the trees and species B depend upon grass. So both of them have different resource, food resource for their survivorship. So if they have this type of conditions, then they are able to coexist in same geographical area. Let's take example. This is species A and this is species B, and this is one geographical area. Now this species A is more competitive but species B is less competitive, and both of them show resource partitioning. बिकॉज जो स्पीसीज ए है ये यूज़ करती है स्मॉल सीड्स को, और जो स्पीशीज बी है ये लार्ज सीड्स को यूज़ करती है टू फुलफिल देयर फूड रिक्वायरमेंट. सो बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट रिसोर्सेज. नाउ स्मॉल सीड्स आर प्रेजेंट इन दिस एरिया एंड लार्ज सीड्स आर प्रेजेंट इन दिस एरिया. सो वी कैन से देयर इज niche differentiation between these two, and they both have resource partitioning between them. And this is the intermediate area where the medium sized seeds are present. So in this case what will happen, there will be the total niche differentiation for species A and for species B. There will be exclusion of this intermediate area. So species A has occupied this much niche which is same size of niche which is present here, बट स्पीशीज बी का जो निश है इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज जो ए है ये ज़्यादा कंपेटिटिव है देन बी. तो ये इस एरिया में रहेंगे और ये इस एरिया में रहेंगे, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, कि कोई भी इनमें कंपटीशन नहीं होगा और ये कोएग्जिस्ट कर सकते हैं इसी एरिया में. सो दिस इज कॉल्ड द निश differentiation.
if they show niche differentiation, then they are able to coexist in same geographical area. But second one is called the competitive exclusion principle. Suppose this is species A and this is species B. They are present in same geographical area. What are the conditions in which these two species, they are not able to coexist in same geographical area? There will be three conditions for this. First of all, these two species, they share common habitat, means there is no niche differentiation between them. Second chance is when the one species is much more competitive than the another. So this species which is much more competitive, it will exclude out the subordinate species. So second condition is this. Third condition will be if there is no resource partitioning, means both species, they use the same food. For example, they use bacteria. So both species, if they are able to use only bacteria to fulfill their food requirement, they are not able to coexist. So more competitive species will fight with the less competitive species and exclude it out. So this is called the competitive exclusion principle. So let's take example. In this example, we have taken the three species of Paramecium. First is called the Paramecium aurelia, second is called the Paramecium cordatum and third is called the Paramecium berzeria. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है कि जो हर एक स्पीशीज है इनको सेपरेटली ग्रो किया है इन द डिफरेंट कल्चर डिशेज और इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स. तो all three are able to survive because they have grown separately in different test tubes. Second condition is that if we grow them simultaneously and if these two species, they have no resource partitioning, this means both species, they use same resource to fulfill their food requirement. So the more competitive species will exclude out the less competitive species. Here in same test tube, the two species of Paramecium are grown. First is called the Paramecium aurelia and second is Paramecium cordatum. And Paramecium aurelia is more competitive species. This is less competitive species. And both of them are able to use bacteria to fulfill their food requirement. So यहाँ पे जो पैरामीशियम ऑरेलिया है ये ज़्यादा competitive है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ग्रोथ करेगा और जो दूसरा है इसको रिसोर्स मिल नहीं पाएगा तो इसकी ग्रोथ जो है ये ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगी और ये बिल्कुल ही इसकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी. ये जो है ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा इस कल्चर मीडिया से. सो दिस टाइप ऑफ प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन principle which occur due to when there is no niche differentiation, when there is no partitioning of food or when there is no resource partitioning. So when the two species, they grow simultaneously but both of them have resource partitioning, means both of them, they use different resources to fulfill their food requirements, means they both have different food resources. So this is the same test tube in which the two species, which is Paramecium cordella, or we can grow the Paramecium aurelia here, and second species is Paramecium berzeria. तो यहाँ पे दोनों स्पीशीज हैं ग्रो की गई. तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा कि जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी. तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया इस एरिया में ग्रो कर पाएगा. और जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है और जो पैरामीशियम ऑरेलिया है ये दोनों यहाँ पे बैक्टीरिया को यूज करते हैं. इनमें से कोई एक स्पीशीज को हमने यहाँ पे डालना है, या इसको या फिर इसको. सपोज कि पैरामीशियम कॉर्डेटम को यहाँ पे डाला हुआ है तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की रेशो ज्यादा होगी, ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करेंगे. जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है ये ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया के ऊपर फीड अपॉन कर पाएगा और इसकी जो कंसंट्रेशन है, जो इसका अमाउंट है, ये इंक्रीज हो जाएगा. दूसरा है पैरामीशियम बर्जेरिया. ये जो है ये ईस्ट को यूज करता है फॉर देयर फूड. तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ है टेस्ट ट्यूब के नीचे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, लेकिन जो ईस्ट है ये फर्मेंटेशन से भी ग्रो होती है. मींस फर्मेंटेशन मींस ऑक्सीजन के बिना भी ये सर्वाइव कर सकती है. तो नीचे की तरफ ईस्ट ज्यादा होगी तो जो पैरामीशियम बर्जेरिया है ये ईस्ट को यूज करेगा और दोनों ही जो पैरामीशियम है ये सेम टेस्ट ट्यूब में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पे रिसोर्स डिफरेंशिएशन है दोनों में, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू कोएग्जिस्ट. सेकंड इफेक्ट ऑफ कंपटीशन इज इकोलॉजिकल कंप्रेशन. If there is large number of competitive species which are present in a same habitat,
each species search for food on the smaller part of total available habitat, and this is called as the ecological compression. Suppose there are two type of species which are living in this geographical area, and both of them have niche differentiation. This species A live in this geographical area and B live in this geographical area, so both have different niches. This is called the niche differentiation. If we introduce the much more species, we can say the species C, D, E, F, G to this area, then what will happen? So if we introduce such large number of species to same geographical area, the ecological compression will happen. That means the species A जो है और जितनी भी all species, their niches will be shrink. There is a shrinkage of their niches. Now species A live in this particular habitat, B live in this particular habitat, C in this, D, E, F and G. Both of them, they have separate niches and their niches, they get shrinked. The species A find all the food resources and space in only in this geographical area. So if this type of ecological changes happen, this is called the ecological कॉम्प्रेशन मीन्स हर एक जो स्पीशीज है इसकी जो निश है ये कॉम्प्रेस हो जाती है, श्रिंक हो जाती है जब हम एक ही एरिया में ज़्यादा स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करते हैं. नाउ थर्ड इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन इज कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट which occur at the evolutionary scale, or we can say which occur at the large scale. So this occur with the evolution. So what is character displacement? It is the type of phenomena in which the two species that live together in same environment or same geographical area, they tends to diverge the characteristics that overlap. Now character displacement occur in two ways. First is called the ecological character displacement and second is called the reproductive character displacement. Suppose यहाँ पे let's take example. This is the island A and this is island B. So island A is occupied with species A which has 1000 individuals, and there are two type of individuals in species A. 900 individuals are the individuals which have large beak size, and only 100 individuals they have small beak size. So there are two type of individuals live in this area. The individuals which have large beak size, they use the large grains for eating purposes, and the individuals with small beak size, they use small seeds to eat. Okay, same with the species B which is live in island B. So यहाँ पे जो species B है इसमें भी 1000 individual है, जो 800 है इनकी beak large है, ये large seeds को खाते हैं, और जो 200 है इनकी beak small है, ये small seeds को खाते हैं. तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स जो कि लार्ज बीक वाले हैं, ये 900, इनको उठा के सेकेंड वाले आइलैंड में ले गए हम. तो अगर इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, अब सीड्स जो लार्ज सीड्स हैं इनकी कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगी, हमने सीड्स तो वहाँ पे नहीं डाले, तो इनमें कम सीड्स हैं, लेकिन जो लार्ज बीक वाले इंडिविजुअल्स हैं वो पहले से ही प्रेजेंट हैं, हमने और यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए. तो इससे क्या होगा कि अब एवोल्यूशन क्या करती है, एवोल्यूशन ऑलवेज चूज द ऑड वंस. सो एवोल्यूशन जो है ये लार्ज बीक इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट काम करेगा. सो दिस इज द कंपटीशन स्टार्ट बिटवीन द लार्ज बीक इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी, एंड नेचुरल सिलेक्शन वर्क अगेंस्ट देम. इन दोनों के जो लार्ज बीक वाले इंडिविजुअल हैं इनके अगेंस्ट काम करेगा नेचुरल सिलेक्शन, एंड देयर नंबर विल ड्रास्टिकली स्टार्ट डिक्रीजिंग. तो इनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा. सपोज कि ये जो एरिया है इसमें स्मॉल सीड्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो जो इंडिविजुअल जिनकी की बीक का साइज स्मॉल है इनका नंबर इंक्रीज होगा, जिनका बीक साइज लार्ज है इनका नंबर डिक्रीज होगा. मीन्स नेचुरल सिलेक्शन जो है ये हमेशा उस इंडिविजुअल को फेवर करती है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये डाइवर्ज हों और उनका सर्वाइवल फिटनेस ज़्यादा हो, सर्वाइवलशिप फिटनेस ज़्यादा हो. तो दूसरे जो ज़्यादा compete कर रहे हैं ये सारे एक्सक्लूड हो जाएंगे यहाँ से. इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट. मीन्स इस आइलैंड में पहले जो लार्ज बीक वाली फिंचेस थी इनका नंबर ज़्यादा था, लेकिन एवोल्यूशन ने इस तरीके से काम किया है, नेचुरल सिलेक्शन ने, कि अब कुछ टाइम के बाद, मीन्स बहुत सारे टाइम के बाद, जो स्मॉल बीक वाले इंडिविजुअल्स हैं इनका
नंबर बढ़ जाएगा और लार्ज नंबर जो लार्ज बीक वाले इंडिविजुअल है इनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा। तो जब इस तरीके से कोई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर किसी इंडिविजुअल में डिस्प्लेस होता है, इसे ही हम बोलते हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। सो एवोल्यूशन लीड्स टू शिफ्ट इन बीक साइज in each species and this is called as the character displacement. So this is all about the effects of competition. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.